अब क्या खरीदा है? कैमरा Sony A7c। इसको लेने का रीज़न बहुत सिंपल है, इसका क्लासिक लुक। As in, when I was in the market looking for a not exactly a professional camera, but a substantial camera which can do everything that you want, I had 3 cameras in mind. एक था canon का R7, then there was Nikon का Z6, and then there was this, all in the price range of about 7,000 to 7,500 dirhams. रुपी INR मैं आपको कैप्शन में डाल दूंगा। सो तीनों ही कैमराज में अगर आप फीचर्स देखोगे तो बेस्ट इज़ कैनन, विच इज़ लाइक लेटेस्ट मई 2022 का रिलीज़ है। बट द थिंग अबाउट सोनी इज़ दैट सी व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी it will age in time, but the looks of the camera should be ageless, and that's primarily the reason why I went with this camera. This may not have the exact number of features as my Canon does, but by looks it's awesome. And it's not just that, it's also the flexibility of using any lens. जैसे कि Canon का लेंस के लिए आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा, and even after the adapter there are some limitations, but when it comes to Sony, इसके थर्ड पार्टी वेंडर्स फॉर लेंसेज आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स लुक इनटू द बॉक्स। सो स्टार्टिंग विथ दिस इज अ शोल्डर स्ट्रैप दैट इट कम्स विथ। ये है इसका बैटरी। So for Sony 7 there are 2 kinds, Sony 7A7c and then there is Sony A7c. दोनों में डिफरेंस ये है दैट C इज़ मोर कॉम्पैक्ट एंड प्लस इसका जो बैटरी है इट लास्ट लॉन्गर। सो दिस इज़ माई बैटरी, दिस इज़ द चार्जिंग केबल। सो दिस इज़ कॉल्ड द किट लेंस, एज इन ये समझ लो आप बिगिनर्स के लिए रहता है हु डोंट नो अ लॉट अबाउट कैमराज एंड दिस, दे स्टार्ट विद दिस। दिस इज़ फ्रॉम 28mm to 60mm. सो मोस्ट ऑफ योर जो फोटोज़ होते हैं वेयर यू वॉन्ट दैट बैकग्राउंड ब्लर एंड एवरीथिंग, for a close by you can get that shot with this. I have something else fixed on it and that is this ND filter. ये जो आप ऊपर देख रहे हो, there are few good things about this ND filter. So this ND filter fits right on your lens. It's variable as in आप इसका जो darkness है वो वेरी कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़, एक प्रॉब्लम और होता है एनडी फिल्टर्स के साथ कि आपको उसको बार बार जब आप कैमरा का वो लिड लगा रहे हो आपको उसको उतारना पड़ता है, बट दिस वन द कैमरा कवर फिट्स राइट ऑन द एनडी फिल्टर इटसेल्फ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक बैक एंड फोर्थ। ओके, सो दिस इज माई लेंस। कमिंग टू द मेन इवेंट, द ब्यूटी। Look at this camera. Just look at this camera. No amount of Canon or Nikon can match with this. I mean, this is like Royal Enfield when it comes to bike. It is ageless. The design is ageless. It is a full frame camera. It is a mirrorless camera. It has every new big and update that you would require in your camera. It has all of them, and it has the best look. Yeah, we'll talk about more about the features later, but this is the camera. What else do we get in the box? Not much, but yeah, so I bought this camera from UAE, so I got a bunch of cables for each type of adapters, like different kind of adapters. So this is it. This is all that comes in the box. सो क्वाइट ऑनेस्टली मैंने कैमरा अनबॉक्सिंग तो पहले कर लिया था, बट मैंने उसको ऑन अभी तक नहीं किया था। मैं चाहता था कि कैमरा का जो सेटअप हो वो सबके सामने हो। सो लेट्स डू इट। कूल। सबसे पहले अपने को लेंस चेंज करना है। सो स्क्रू, ओके, so the lens is on. Now it's time to put in the battery. So open,
battery. Okay, that's a snug fit here. Okay, now we have to put the memory card. मेमोरी कार्ड जाता है इसके ऑपोजिट एंड में. सो ऑन करने के लिए you have to turn this around, it turns on, and then the power button is this one, right? Okay, so for going up and down you turn this around. For selecting you select this one, set area, date, time, enter. All right, let me quickly fix this and then get back to you. So cool, setting it up was a big time pain, but yeah, so we finally have our camera all set up. So with the ND filter, the battery, and the 128 GB extreme card, this is shockingly light, very compact to hold, and yeah. So I'm gonna put some photos that I take with this camera towards the end of the video. So watch it till the end. Bye.